Hi guys, welcome back to another episode of Happy Chirp. This conversation is sponsored by Manto, which is a fashion brand, and they make the most comfortable kurte pajame, like the one that I'm wearing here. And they've quite literally transformed clothes into art pieces with their calligraphy and art designs. And the best part is कि इनके सारे कपड़े are made 100% in Pakistan. अब जैसे जो मैंने ये पहना हुआ है, I love that, this dupatta thing. I think it sort of represents blue pottery, जो I think मुल्तान में बनती है. So I love that. And I love the color of this kurta as well that they have given me to wear on this episode. I think इनकी एक बहुत important philosophy है कि you are what you wear, because in your daily life, your clothes sort of really impact your life and how you feel. They can make you feel confident, they can make you feel uncomfortable and underconfident. But their clothes are always so comfortable, and I'm not just saying this because it's sponsored, but honestly, they're so comfortable and so pretty and simple as well that I always end up feeling super confident. So I'm happy to wear this on this episode of Happy Chirp. But with that, I'm going to continue our conversation with my guest today, Hamna Usmani. और उनकी स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत इंस्पायरिंग है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनकी जो पर्सनल लाइफ और एक जर्नी है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे हम लोग रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे लेवल पे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं. तो आइए उनसे बात करते हैं. हाउ आर यू हमना? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग Thank you फॉर for द having सेकेंड me. टाइम. मैंने इनके साथ पहले भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी. No one can say they have done it 2 times. Yes, she's been on Happy Trip twice. But हुआ ये था कि बिल्कुल एंड पे, like when we were done and I had just gotten up to turn everything off, लाइट चली गई और हमारी ऑडियो फाइल सारी करप्ट हो गई. तो behind the scenes कभी कभार ऐसी. So it actually means a lot to me that she took out the time to come and speak to us again. अच्छा हमना, so हम स्टार्ट करेंगे way back से. Okay. ठीक है. आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई, आपका क्या बचपन कैसा गुजरा? मैं कराची में पैदा हुई. आई लिव देयर फॉर 11 years एंड मेरा बचपन इट वॉज प्री नॉर्मल, लाइक सारे बच्चों का जैसा होता है. I didn't used to feel different. Nobody made me feel different. My family is very supportive. My siblings, relatives, everyone. I've been blessed. I have great friends, so I've been very blessed. So it was pretty normal. Nobody made me feel any different. Yeah, I remember going to a lot of doctors because my parents wanted, me to get better for me. But yeah, that's what my childhood is about pretty much. हाँ, तो आप इस्लामाबाद कब मूव हुई थी? When I was 11 years old. When you were 11 years old, ठीक है. So growing up in Karachi, आप स्कूल वगैरह जाती थी, सब होता था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? Actually, मुझे याद है people used to like see me differently or मतलब sometimes point or laugh, but मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया गया था मेरे घर में that I'm different या फिर ये चीज़ एक बुरी चीज़ है. It was like मुझे लगता था हाँ I'm different but it's okay, it's normal. होते हैं कुछ लोग, but I never used to see it in a bad way. But the outsiders, after I moved to Islamabad, I used to get reaction from people, like some used to point and laugh. तो वो मुझे चीज़ लगने लगी थी because आप बड़े होते हो, आप चीज़ों को समझने लगते हो. और आपके टीन एयर्स में तो आपको ज़्यादा ही चीज़ों को फील करने लगते हो. So yeah, when I moved to Islamabad, I started to feel things that maybe, but still I wasn't bothered about it. I was like, yeah, people are going to treat me differently because I am different. I'm not denying that, but I still didn't used to take it in a bad way. But then an incident happened and everything just changed for me. Like मतलब बिल्कुल ही perspective change हो गया था. हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं कि you were born with this, right? Yeah. थोड़ी सी आप डिटेल बता सकती हैं about this Yeah. birthmark? It's a birthmark. It's called port wine stain and Serge-Weber syndrome. And yeah, I was born with it. And yeah, that's pretty much. It's a malfunction of veins actually on the left side of my body. Like on face, it's more prominent, but on the rest of my body, it's like in patches. So yeah. So it's like half of your body? Yeah. अच्छा, सही सही. So you grew up with it. आपको ज़्यादा फील नहीं हुआ. फिर I think एज पे ये होता है कि बचपन में शायद आप स्कूल वगैरह भी जाते हो, तो जो छोटे बच्चे होते हैं शायद उनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता.
लेकिन जब आप बड़े होते हो और चीज़ें समझ आती हैं दूसरों के भी और आपको भी, तो ये चीज़ ज़रा फील होना शुरू होती है. ठीक है. सो आपने एक इंसिडेंट की बात की, क्या हुआ? Actually, when I moved to Islamabad, after a couple of years, I moved to a different area, different house, and it was actually mid of year. तो मतलब ज़्यादा एडमिशन नहीं मिलता है स्कूलों में. So there was like मोहल्ले का छोटा सा स्कूल, because I didn't want to waste my whole year. I was like, पापा यहाँ ले कहीं तो लेते हैं start कर लें. admission, and you know, just at least ज़ाया नहीं होगा साल. So I went for an admission. They took my test and everything, and I cleared. It was all okay. Then the principal, he called me and my father in his office, and he's like, we would really appreciate अगर आपकी बेटी जो है वो अपना face cover करके आए school, like नकाब करके आए, क्योंकि हम नहीं चाहते बाकी बच्चे डर जाएं. Like he literally straight up told me this, like कि बच्चे ना डर जाएं. हाँ, exactly. Like कोई मतलब मीठी मीठी नहीं, कोई कुछ नहीं, directly. And मतलब it just everything just changed for me, because I never looked at myself that way. कि मतलब लोग मुझे ऐसे भी देख सकते हैं कि जिससे कोई डर जाए. That's such an awful thought to I have. never used to take it as a bad thing, but you know, he told me that maybe it is, and I was just crying in front of him, and my father is looking at him shocked कि ये मतलब बोल क्या रहे हैं. And then when he realized that I'm crying, he's like, आपकी बेटी के लिए भी अच्छा है, you know, उसे भी face नहीं करना पड़ेगा ये सब. But he wasn't making it better, he was just making it worse for me, because at that point I just wanted, you know, कि ज़मीन फटे और बस मैं चली जाऊँ अंदर. It was that moment. And you know, every interview I gave, I talk about this incident so much, because I think my life revolves around it. There was me before that, living in my oblivious world, not knowing a thing. And then there's after that, and where everything changed. Like, people used to call me so confident. I'm like, what? Before the incident, people used to say, you're so confident. I'm like, what is इसमें that? confident होने की बात क्या है? It's just normal me. And then after I realized, when my confidence was shattered completely, like I didn't want it to go out, I didn't want it to talk to people. मेरा school जाने को दिल नहीं करता था, because I ended up going to that same school because of some reasons. And I had to cover my face. You did end up covering your face. I did. It was, after I went home, I thought maybe बेहतर ही है. गुजार लेते हैं यार, क्या होगा. I give it a thought. And my father was like, कोई ज़रूरत नहीं है if you're not comfortable. I was like, for my own good, I should maybe, you know, go, और मतलब मेरा साल ना ज़ाया हो बस इस चक्कर में. And it was co-education, and I was so scared to talk to the opposite sex after that. I was even generally people, लड़कियाँ सब, मतलब I used to be so underconfident that teacher used to ask me a question and I used to be numb, because I didn't want anyone to hear me. It was that bad, and I used to get home and I used to cry, and nobody understood. Even my family is so supportive, and they're so understanding. Still, they can never understand what I'm going through, because They're not you. Yeah. even, you know, I think if you are the person who is going through the same thing as me, still you don't understand what I'm going through, because every perspective is different for every person. So my family was supportive, but I used to cry so much, and it used to hurt so much that I used to cut myself with a blade. And because I just wanted this pain to go away, and it wasn't going away. I mean, मैं रोज स्कूल जाती थी, and I had to face that reality. And even though people were not making me realize that I'm different, that niqab thing, it made me do that. Because you realized it. I think अपने अंदर से चीज़ आती है ना. बात ये होती है कि आप अगर इट्स एज सिंपल एज दिस, अगर आपके अपने अंदर एक बिलीफ हो या एक कॉन्फिडेंस हो, जब तक वो बहाल रहता है, बिल्कुल, तब तक आपको आगे पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि बचपन में आपको नहीं फर्क पड़ता था कोई हंस रहा है, कोई देख रहा है, बिकॉज यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, राइट. लेकिन जब वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, तो फिर चाहे आपको कोई वैसे ही देख रहा हो, बिल्कुल, गुजरते में किसी ने आपको देख लिया, आपको ऐसा ही फील होगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. इवन व्हेन पीपल प्रेज यू, लाइक आज अच्छी लग रही हो, ये बात आपको झूठ लगेगी, यू आर लाइक हाँ सिंपैथी दिखा रहे हैं बस, बट इट्स नॉट एक्चुअली द ट्रूथ. वो आप नेगेटिव, जब आपको थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है ना, आप हर चीज़ में नेगेटिव देखना शुरू कर देते. तो इवन आई हैव द मोस्ट अमेजिंग पेरेंट्स एनीवन कुड एवर हैव.
एंड इवन आई यूज टू थिंक कि मतलब शायद ये मुझसे प्यार नहीं करते, बिकॉज आई गॉट सो नेगेटिव एंड आई यूज टू थिंक दैट आई एम अ पीस ऑफ शिट, एंड इफ आई एम नॉट हियर द नेक्स्ट मोमेंट आई डोंट थिंक एनीवन वुड मिस मी. लाइक अगर मैं यहाँ ना हूँ तो मेरे माँ बाप के सर से बोझ ही उतरेगा. That's what I used to think. And I used to think, you know, probably, you know, लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लोग खुश होते हैं, मेरे माँ बाप तो रोए होंगे. I mean, इतनी नेगेटिव हो गई थी, even though it's not the truth. It's not the I mean, truth. if it was the truth, मेरे पेरेंट्स मुझे अभी इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते, या मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन या मेरी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी ना कर रहे होते. बट when your thoughts get negative, you see negative in everything. So, That's yeah. true. बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात थी जो आपने अभी कॉम्प्लीमेंट वाली की थी. इट फर्दर इस्टेब्लिशेस ऑन दैट कि जो मैंने अभी बात की थी कॉन्फिडेंस वाली अपने अंदर होने की, कि कोई क्या कहता है इवेंचुअली उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके अंदर ना हो. मतलब लोग आपके मुंह पे आके आपकी तारीफ़ भी करें, बट बिकॉज यू डोंट बिलीव इट, उनकी तारीफ़ आपको सिंपैथी ही लगेगी, जो मर्जी हो जाए, चाहे वो जितनी भी जेन्युइन हो. एंड ये इतनी बड़ी सैड रियलिटी है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी फिर भी, इसीलिए जब आप अपनी ज़िंदगी दूसरों की वैलिडेशन के लिए गुजारते हो तो आप कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन आउटसाइड, और वो आपको चाहे बाहर से जितनी भी मिल जाए, अगर आपके अंदर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपको यू विल नेवर ट्रूली बिलीव इट. मे बी यू विल बिलीव इट फॉर अ बिट, बट व्हेन यू गो इन योर ओन बी बाय योरसेल्फ एंड यू, आपका जो इंटरनल मोनोलॉग होता है, जो आपके जहन से जो बात आ रही होती है, आपके अंदर से जो बात आ रही होती है, उसको आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो. और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है ना, तो वो आपका जो इंटरनल मोनोलॉग है वो बहुत हार्मफुल होता है. वो ऐसा ही होता है कि आप यूजलेस हो, आप लूजर हो, आप अनवांटेड हो. एंड ऑब्वियसली आई हैवंट बीन थ्रू व्हाट यू हैव बीन थ्रू, ऑफ कोर्स मैं वो नहीं कहूँगी, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रगल मेरा रह चुका है, तो मुझे पता है कि वो एक फीलिंग कैसी होती है कि चाहे बाकी जो समझ रहे हो, जो उनको लग रहा हो, आप जब अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकती. Exactly. जब तक आप खुद ना चाहो. हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें यू हैव टू बी योर ओन हीरो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली इन अ केस लाइक योर्स, कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर सेल्फ डे इन एंड डे आउट कि इट्स ओके, इट्स वेरी वेरी हार्ड. सो बट सी, आप आज यहाँ बैठी हुई हैं मेरे साथ, कैमरे पे बात कर रही हैं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई do not see any difference between you and any other guest that has been here. How did you do that? How are you here now? How are you again, I'd say, so confident? I don't know. I mean, there was point when I didn't wanted to face people, and then मतलब at the end of the day आपका है ही कौन? अल्लाह ही है सिर्फ. You have your parents, you have your sibling, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है. True. And I, मतलब मेरे बस में कुछ भी नहीं था. Even though my parents tried getting me a laser treatment, मेरी 2-3 सर्जरीज भी हो चुकी हैं, and at the end of the day I was like, पहले मैं कहती थी या अल्लाह मैं ही क्यों? I mean, इतने दुनिया में लोग हैं, सबको तूने इतना खूबसूरत बनाया है, तो मैं ही क्यों ऐसी? एंड देयर वर पीपल कमिंग अप टू मी कि शायद आपके माँ बाप ने पास्ट में कोई गलती की होगी, उसका नतीजा हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं और कैसी बातें करते हैं. एंड मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसको सुन के किसी का फायदा नहीं हो रहा, एंड इट्स ओनली गोइंग टू मेक द अदर पर्सन फील लाइक शिट. एंड ऑनेस्टली आई थिंक एवरीवन इज गोइंग थ्रू इट. मतलब ओके, आई एम डिफरेंट, आई वाजंट कॉन्फिडेंट, बट आई गेस हर कोई आजकल बुली हो रहा है. लाइक यू आर अ personality and you have so many followers on Instagram, and I'm sure you still go through so much hate. Even though you are beautiful, even though you have an amazing vlog, even though there's so many people who are your fan, including me, but still you go through it. So it's just not me. I think so many girls, so many boys, everyone could relate to me when it comes to confidence. And when it comes to bullying. So लोग किसी को भी नहीं छोड़ते. I feel like. बस यही है. एंड आई केप्ट उसके बाद आस्किंग फॉर हेल्प. लाइक मैं एक स्टेप आगे बढ़ती थी ना, लोग मुझे 10 स्टेप पीछे भेज देते थे. एक बात, किसी की एक बात, एक नज़र, एक चीज़. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ दैट आई वांट टू पॉइंट आउट टू माय ऑडियंस इज़ दिस शोज़ दैट वन इंटरव्यू विद दैट वन प्रिंसिपल
how that incident and those words can literally change someone's entire life. और अगर आपको इस तरह लगता है कि इनका बहुत स्पेशल केस था या कुछ, हाँ, बट वो किसी और के साथ भी हो सकता था फॉर एनी टाइनी थिंग. कि कोई बच्चा बचपन में या कोई एट एनी पॉइंट आपकी एक ऐसी चीज़ पॉइंट आउट कर दे कि आपकी ज़िंदगी उसके आगे से बदल जाए और वो आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाए कि हाँ, यू नो, लाइक लोगों का होता है कि वो काले हैं या मोटे हैं या छोटे हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं. या आई डोंट नो, लड़कियों का तो ये भी होता है एक पॉइंट पे प्यूबर्टी के बाद कि वो फ्लैट हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बॉडी इज़ नॉट गुड इनफ, दिस दिस बॉडी इमेज इवन आफ्टर मैरिज यार, मतलब बच्चे नहीं हो रहे, so many things. कोई like, छोटी सी आपको आके बात कर सकता है. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी so careful with our words. Yeah, बिल्कुल. Because they can literally change someone's life. Like you said कि आपकी उस इंसिडेंट से पहले की एक लाइफ है और उसके बाद की एक लाइफ है. So it was a defining moment. So आपने कभी इसकी कोई ट्रीटमेंट्स हैं जो आपने कंसिडर की? When I was very little, I was 5 years old. तो माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू गो टू इंडिया, क्योंकि वो ट्रीटमेंट सिर्फ इंडिया में था या आई गेस सिंगापुर में था. एंड राइट दैट डे व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट माई वीज़ा, माई मामू कॉल्ड मी फ्रॉम लाहौर एंड लाइक यहाँ पे वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सो यू डोंट हैव टू गो टू अनदर लैंड. इट वाज इन लाहौर. So my father took me there and it was like, हाँ हो जाएगा, only 8 treatments needed and your daughter will be good to go. And so I used to travel from Karachi to Lahore after every 15 days to get that treatment done with my father. And it was a laser treatment. It's called dye pulse laser. They basically, what laser is, they burn your skin or matlab, and I was just 5 years old. So it was so painful for me that I used to cry every time I used to go there. I remember I used to bribe my parents कि वापसी पे आप मुझे KFC लेके जाएंगे तो मैं करवाऊंगी, because anyway कि मतलब किसी तरीके से टल जाए, because my skin used to get all burned और फिर वो heal होती थी तो there was like a little tiny part जो कि white हुआ होता था. I had done it on my forehead, तो यहाँ पे थोड़ा सा white है. But he only used to like put 5% on me. Like 100% की बजाय वो सिर्फ 5% लगाते थे मेरे ऊपर, तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था. So my parents decided that maybe I'm too young for all of this. ठीक है. So they were like अभी रहने देते हैं. So the doctor suggested, क्योंकि मेरी ये जगह बहुत सूजी हुई थी, I had very infected gums and everything. So my doctor suggested कि इनकी सर्जरी हो जाए पहले, बेशक प्लास्टिक सर्जरी या जो भी, तो then after that we will see. So I had surgery. I had 2 major surgeries, where they reduced my cheekbone, they extracted my teeth, they reduced my gums, they reduced my lip. It was very swollen. So yeah, I had 2 surgeries, and then after that, still even, I was going to get better. Still, I didn't used to feel confident. Like my parents were doing everything they can to make me feel better, and I wasn't. और फिर बस यही हुआ, मैं पहले अल्लाह ताला से बोलती थी अल्लाह मैं क्यों, एंड देन आई गॉट सो टायर्ड ऑफ इट. आई रियलाइज दैट इस पर मेरा कोई जोर है ही नहीं. आई बीन थ्रू सो मच पेन, लाइक 8 घंटे in an operation theater, and still I'm looking the same way. That means मेरा कोई बस है ही नहीं इस पे. मतलब I remember being in an ICU, my face full of stitches. They were like drip here, everywhere. I used to spend days like this. And still इतनी दर्द होने के बावजूद भी still I'm not looking any different. तो मेरा तो कोई जोर नहीं है ना इस पे. Then I asked Allah, या अल्लाह अगर तूने ये मुझे दिया है ना तो मुझे इसी के साथ खुश कर दे. If you don't want me to be different, then मुझे इसी पे तसल्ली दे दे, then मुझे इसी पे खुश कर दे, कि मुझे फिक्र ही ना हो कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे फिक्र ही ना हो कि फ्यूचर में क्या होगा. Well, after days and nights of praying, it aista sahi, but it finally happened. That I started liking myself. Acceptance. I started getting ready for myself. I started liking makeup a lot. I used to do it on myself. And yeah, now, कहना बहुत आसान होता है, but जब आप गुजरते हो ना, every day feels like million years.
And yeah, but I got through it, alhamdulillah. So yeah, now I don't care. फिर आपने उस वक्त छोड़ दी थी ट्रीटमेंट, फिर आगे क्यों नहीं कराई? उसके बाद बड़े हो yeah, गए? well, I went through this journey of self love, and Allah Ta'ala ने मुझे इतना confidence दे दिया that I don't want to do it now. Like I have accepted myself as I am. Now I think that it's my identity. Like now, I know very few people know me, but they know me because of this. They call me confident because I am living with it confidently. I'm loving myself. So yeah, if Allah wants me this way, then I am happy this way. Yeah. यही सबसे अमेजिंग बात है आपके बारे में कि now you are accepting of it, you are living with it, and it's not just that. Like, the interesting thing is that you have a love for makeup. Yeah. And when it comes to makeup, because makeup is part of like a beauty industry na, overall general. एक तो हॉबी भी होती है, बट you're also pursuing it. आपका पेज है मेकअप बाय हमना, और वहाँ पर आप मेकअप की चीज़ें डालती हैं. तो ब्यूटी इंडस्ट्री में देयर इज़ वेरी लाइक स्टैंडर्ड्स है ना, और एक आइडिया है ऑफ व्हाट इट्स सपोज टू लुक लाइक एंड व्हाट यू आर सपोज टू लुक लाइक. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग बात है कि आप उसी इंडस्ट्री में हो और आप उसको कॉन्फिडेंटली परस्यू कर रहे हो. एंड ये कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू एंड अप बीइंग इन दिस? बिकॉज व्हेन यू हैव अ कंडीशन लाइक योर्स, या नॉट इवन द कंडीशन, लाइक अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मसला हो ना, तो यू वांट टू हाइड इन द शैडोज. लाइक मुझे पता है कि जब मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज आए हैं, तो I didn't want to make my Instagram stories. I didn't want to appear here. And every time that I had to do it, it was like a struggle where I had to do the self-talk ki hum na fake it till you make it. True. Fake it till you make it. Get there, get going. Every time I have to give that pep talk to myself. So, ये बहुत amazing बात है कि how you are putting yourself out there, क्योंकि वो तो किसी के लिए भी मुश्किल है. एक होता है अपने neighborhood में करना अच्छा, फिर होता है आपके लिए स्कूल जाना भी मुश्किल था, पब्लिक में जाना मुश्किल था. लाइक यू सेड, यू स्टॉप्ड गोइंग आउट. नाउ यू पुटिंग योरसेल्फ आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू सी. सो हाउ? Well, I started getting good at makeup, and my sister. Makeup में interest कैसे आया? Well, I used to spend a lot of time in bed after my surgeries. I was on bed rest. ये कब की बात है? It was, I think, in 2016. ठीक है. Yeah, so I used to watch a lot of makeup videos. उस time पे मतलब बहुत trend पे आया हुआ था, like makeup tutorials and everything. It was like the rise of makeup blogging उस time पे. Exactly. I didn't used to like makeup when I was little. I was like, क्या बंदा यार क्या मुंह पे लगा के फिरता रहे. And then I started watching it, and I was like, with makeup you can transform yourself in any way you want. So I started really liking it, and then I started trying it. I didn't used to have makeup. I used to try my mom's makeup, and then karti gayi, practice makes the man perfect. So I used to practice on myself, and I got better, and then everyone started praising me, my sister, my family. And then then blogging came in के मतलब यार इंस्टा पे पेज बना लेते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर लग जाएगा. But it was very difficult for me, maybe normal for another person, but my sister gave me the confidence that you are good at it, you should do it. But my focus was not makeup. When I got confident, I was like, I need to let people know that it's okay. People like me, people who are underconfident. So my main thing was not to make a blog about makeup. Obviously, it was about makeup because that's, I think, the only thing I'm good at. But it was more for self-acceptance. Yeah, so I wanted people to, I know I'm not an inspiration for anyone, लेकिन अगर मुझे देख के किसी का दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है या किसी को थोड़ा सा confidence मिल जाता है, then I think मेरे लिए हो गया. And now I get messages from people that because of you I'm confident. I used to hide in my room, and now I see you, like how confident you are, and I think it's okay to go out there. लोग सोचते होंगे ना कि यार ये कर सकती है तो हमारे पास क्या एक्सक्यूज है. एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि लाइक if you are so confident to put yourself out there, then I have absolutely no excuse, and I can't sit here and worry about what people are thinking. Yeah, बिल्कुल. हाँ. मतलब
आपको जो है ना ये चीज़ फेड आउट करनी होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, ऑब्वियसली It's a देयर journey. आर लो डेज, आई हाँ. मीन देयर आर डेज व्हेन आई एम नॉट फीलिंग Of course. very well and I don't want to get out of bed and I don't want to put myself in front of a camera. It's fine, everyone goes through that. It's not like कि एक दफ़ा आप confident हो गए और एक दफ़ा आपको पता लग गया कि what is self love, you are like okay अब तो सारी ज़िंदगी आराम से हाँ, ऐसे नहीं होता, वो एक जर्नी होती है Yeah. इसमें हमेशा डाउनर्स बार You बार know, आते हैं where you have the yeah. realization again I think you have to fight your demons every day. every day. Like you हर have रोज to, की बैटल yeah, है. you know about that pep talk, you have to get up every morning and give yourself that every day, क्योंकि if there are like 10 people positive, there are thousands of people negative who are trying to bring you down. So you have to fade all of that out and focus on that 10 positive or 1 positive, and you have to give yourself a pep talk every day. So yeah, it's not that easy, but you can do it. You can do it, I'm sure. अच्छा, आप मुझे बताएं कि when you step out of the house, when you go out in the public, what is that like? लोग किस तरह react करते हैं, या is it, what do you think? Generally Well, I people. think nothing has changed. When I used to be little and I used to be underconfident, I used to feel all those things. Now I don't. And you know how I told you that you have to fade it all out. I just focus on me. Like, and now people see me all confident. They like, मतलब थोड़े से intimidate हो जाते हैं वो. And they like back out. And no, मेरी बुरी आदत है, but कोई मुझे देख रहा होता है ना, and I used to Stay back. stay back, and I used to keep looking, and until they're like, okay. हाँ. So you know you have to मतलब अपने आप को आपको ऐसा present करना पड़ता है that it doesn't bother you. And it really doesn't bother me. And when it doesn't bother me, लोगों को भी लगता है यार नहीं, we can't, मतलब हम लोग नहीं दबा सकते इस लड़की को या क्या. So yeah, you have, मतलब आपका posture, आपका एक gesture ऐसा होना चाहिए. Body कि- language. Exactly. हाँ. ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की हिम्मत ही ना हो कि आप पे पॉइंट कर सकें या हंस सकें. Yeah, you can't be bullied away. क्योंकि पहले ऐसे लोग होते थे एंड आई यूज्ड टू मतलब क्राई, हाँ. क्योंकि मैंने लोगों को वो पावर दी हुई थी अपने ऊपर. हाँ. गेस यू कैन मेक फन ऑफ मी एंड आई विल फील दैट. हाँ. नाउ आई डोंट गिव अ शाइट. Good. So for the sake of people's learning, आप मुझे ये बताएं, how do you want people to behave with you or be with you? Does it bother you अगर लोग inquire करें कि आपको क्या हुआ? एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल जो कि मतलब एक तो होते हैं कि आपसे एक सेकंड, sorry, या people should pretend like they're looking past it completely. No, Okay. I'm completely okay for you to come up and ask me. Okay. लेकिन एक आई थिंक तरीका होता है. देयर आर पीपल जो आके आपसे आपका हाल चाल पूछते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे आस्क अबाउट इट. इट्स ओके. आई मीन आई थिंक यू शुड हैव अ नॉलेज. एंड देयर आर पीपल जो आके मतलब बदतमीजी से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है. एंड लाइक किसी ने तेजाब फेंका है, बचपन से हुआ है. लिटरली आई मीन आई गो थ्रू इट मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक पीपल मैसेजिंग मी, इवन कमिंग अप टू माई फेस एंड आस्किंग मी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई फील लाइक कि हर बात करने का एक तरीका होता है. यू कैन कम अप एंड आस्क मी बट तरीके से. Yeah. So I'm not, I'll tell you every detail. I'm completely okay with that. But you know, बात Be करने का sensitive. तरीका, yeah. It really matters. लेकिन बहुत अच्छी बात मुझे इसमें लगी वो ये कि जो आपने भी बॉडी लैंग्वेज की बात की या कॉन्फिडेंस की बात की, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से लाइक व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इट्स सो ओवरपावरिंग कि बंदे को जैसे मुझे भूल जाता है दैट योर कंडीशन इज़ देयर, दैट योर बर्थ मार्क इज़ देयर बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस. इट डजंट कम इन द वे ऑफ speaking to you or talking to you, and you know I can look past it. Yeah. वो तो ये है कि अभी we're talking about that right now, but even if like it's very easy for me to completely look past it and think of you as a very, you know, normal person. जो आपको था कि I used to consider myself very like everybody else, and that comes because of your confidence. कि I'm able to look past it, I'm able to see past it and just see you as anybody else. Yeah. But अगर वो आपके दिल में हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो, तो आई थिंक अगले बंदे को भी शायद वो उतना ही फील होगा. तो ये बहुत बड़ी बात है कि it's there and it's so prominent, but because of your confidence it's
not there. Yeah. Yeah, pehle I used to think that it's a curse, but now I think it's a blessing and it's my identity and yeah, I kind of like it. अच्छा, so फिर उसके बाद आपने फिर क्या किया when you left studies? So did you just stay at home? Did you? Yeah, after I left studies, I had 2 surgeries. That took almost a year or two because Dental surgeries? not dental. Oral? yeah. हाँ, jaw related and all. Yeah, everything. I think you see that scar? हाँ, Yeah, they reduced my jaw, सही. cheekbone, and everything. All of that area. So yeah. अच्छा, हाँ, सही. And जो आपकी बाकी सारी treatment है, that I think that get rid of the pigmentation and all, you refused to have it done, right? Yeah. So how does your family take that? Were they okay with that decision? या कोई pressure आता होगा कि करवा लो? Yeah, my family insisted me to get it done क्योंकि I mean आपके माँ बाप जो हैं वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं. they're like लड़की हो आगे जाके शादी होनी है. शादी. they weren't like कि इसके बावजूद नहीं होगी. they were like कि मतलब for your betterment क्योंकि आगे जाके you know you have to face even more difficulties after marriage. और हम नहीं चाहते कि कोई इससे तुम्हारी कमजोरी बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज करे. So yeah, but I don't want it. I just don't want it. Like, I don't want to go through with all of that. Like, I went through hell to get this confident. And now I don't want to lose it all. Like, now I finally accepted it, and when you want me to lose it, I mean, मतलब जब मैंने अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो अब मैं चेंज कर लूँ अपने आप को. इतनी मेहनत करने का फिर फायदा नहीं ना. So, and I'm honestly okay with having it. Do you think you will ever consider it in the future? I don't think so. You're pretty sure? Yeah, I'm sure. ठीक है. So, what are your, like, up at this point, from this point forward, आपका blog है makeup वाला, and do you take appointments? Yeah, is it just a blog? Sometimes. अच्छा. So, what are your future plans that you want to pursue? Makeup ही आगे या क्या? Yeah, one of the reason I didn't study further because I was interested in makeup and I didn't want to do anything else. So वो डिग्री लेने का ही क्या फ़ायदा जो अलमारी में पड़ी रहे. But yeah, I think I will continue studying inshallah अगर अल्लाह ने चाहा तो. When But you're ready? हाँ, when I'm ready because I think मैंने अपनी ज़िंदगी का प्रेशर ना ले लिया है सारा. So I don't want to feel any more pressure on myself. I just don't want to do that to myself again. So when I'm ready, I'll do it. If I'm not, then nobody can force me. So yeah, but I want to pursue makeup. I want to maybe inshallah in future open up a salon or something. And I want to get better at it. I think I'm still not there yet. I mean, I still have to work in progress. Yeah, I still have to go a long way. But yeah, that's what I want to do. So आपने अपनी education पूरी करनी है और आपने makeup pursue करना है. अच्छा, सही. And क्या आप किस चीज़ में एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं? I really don't know. When I was little, I wanted to be a doctor, and then I realized कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है. So I was like, That's not my cup of tea. it's not possible. But I don't know really. Maybe something to do with arts because I'm such an artsy person and very creative. So maybe with that. So in this entire journey, आपको क्या लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा where did that support system come from? Like, who was your support system? Who would you owe it to? किसकी वजह से आपकी ये journey रही है? I think my family, like my sister. मतलब Is she older or younger? She's older. I'm the youngest one in the family. अच्छा. And I mean, वही जानती है कि उसने मेरे साथ कैसे गुजारा किया. अच्छा. Because I mean, having an underconfident sister is a very difficult thing, I think. So she used to, you know, give me confidence on everything. On every little thing, I used to complain कि यार नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती. I can't do that. मुझे नहीं जाना. So she's like my second mother. So she used to handle me. But also my parents, my father. I mean, he never. I think he's the reason that now I don't take it as my weakness because. From the start, I remember he used to say कि मतलब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो सब एक जैसे हैं तुम नहीं हो. Take it in a positive way. Maybe that's special. Maybe Allah Ta'ala ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है. So yeah, he used to give me that confidence.
And yeah, I think my father, my sister, everyone in my family, I have very supportive family. What was your extended family like? I mean, okay, supportive. Hmm. Yeah. Hmm. I mean, everyone. I didn't get bashed or I didn't get any hate Hmm. from my family, my friends, my relatives. Your friends also. Yeah. Huh. I have my childhood friends were very supportive. They're still my friends. Hmm. And उसके बाद when I went through this, मैंने दोस्त बनाना छोड़ दिए थे because I used to be so underconfident. मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बात करूं. And that is still with me. I think I became very shy, very antisocial. So yeah, I still don't know how to talk to people. You're talking to me. Yeah. So I don't think that that's a very much of a problem. But हाँ ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको internally feel हो रही होती हैं, जाहिर सी बात है. हाँ, but they don't show. Like people Yeah. don't know, okay, you know what you're thinking or what you're going through. I mean, when you've been through all this, I don't think it completely goes Yeah, away. it can't. Some of the things, little bits and pieces stays. Hmm. So yeah, I think that's for me. Thoda sa, because I used to be so chidchidi and so ziddi and badtameez, and I think that has stayed with me, which is a very bad thing. So, Really? yeah. Why? Why do you think so? I mean, I used to be chidchidi because everything was so dark Yeah. and so Yeah. messed up around me. हाँ. And that I became very badtameez. कि मेरे दिल में जो आता था, I used to say it to everyone. Like मैं अपनी family के आगे बोलती थी और किसी के हाँ, आगे ज़ाहिर बोलने है. की. हाँ. So yeah, मतलब it was kind of a shield for me. I don't know if that's a good thing. I think it's a very toxic thing to say. But कोई मुझे कुछ बोलता था ना तो आगे से जवाब दो और चुप करा दो. That was my thing. Even they were saying a good thing to me. I didn't want it to hear it. Like there was so much going Frustration, inside. Yeah. build up. Yeah, there was so much going inside me that मुझे लोगों को सुनने का दिल ही नहीं चाहता था. That I used to, give them a shut up call and was like, and I don't know why that has stayed with me. So I'm such a bratty little one in my house. Yeah. Maybe that just has to do with the fact that you're the youngest and obviously you were spoiled and they gave you all that love and all. So I think that's like a part of it. तो वो भी होता है. अच्छा, so you said कि हमने support system की बात की and now you have a public facing situation here. तो उसमें क्या, how has the online community been? Well, when I started, I used to be very scared because I was like, her comment pe hate milega. But surprisingly, that was not the case. If there are bad people, there are good people too. Yeah. And in my case, I have mostly experience with good people online, and so much love, so much support. I have such an amazing followers. But at the same time, when there is love, there is hate. Yeah, They it both comes with go, it. साथ. So yeah, I get hate comments, but when I do and I put it on my stories, and then उसके बाद मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. लोग ही आ जाते हैं. Like उसके बाद my followers are like at it. मतलब उस बंदे का inbox full हुआ होता है. So yeah, I have very supportive followers. But yeah, I do get hate, but it doesn't bother me. That's anymore. good. That's good. Yeah. But वैसे I genuinely believe in this that दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बिल्कुल. बुरे लोग कम हैं. शायद हम कुछ लोग highlight बुरों को ज़्यादा करते हैं. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग मुझसे ना एग्री करें बिकॉज ये बहुत एक कॉमन नैरेटिव होता है कि दुनिया बहुत बुरी है और लोग बहुत बुरे हैं. एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि लोग बुरे नहीं होते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे तो मैं एक बहुत ही क्या उससे कहते हैं, क्या ऐसी जगह से बोल रही हूँ कि अच्छा मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो लोग अच्छे होते हैं. लेकिन इवन देन आई जेन्युइनली बिलीव कि दुनिया में लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं और कम लोग बुरे होते हैं. हमें अपना फोकस उन पे रखना चाहिए. या आई एग्री, क्योंकि जब आपके साथ कोई अच्छा करता है ना आप उसको याद नहीं रखते, लेकिन जब कोई बुरा करता है ना वो आपके दिमाग में रह जाता है. बिल्कुल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा भी किया होगा, बट या आई ओनली रिमेंबर द बैड वन. सो आई एग्री देयर आर गुड पीपल, मोर गुड पीपल, लेस बैड पीपल, एंड वी टेंड टू ऑब्वियसली हमारे ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस एंड क्योंकि एज ह्यूमंस हमारी अंदर से है टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. तो हमारा ये होता है कि अच्छा कहीं किसी ने बुरा किया या बुरा कहा तो हम उस एक्सपीरियंस को अपनी रियलिटी बना के फॉर एवर कि अच्छा हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो
हर किसी पे शक और हर किसी को बुरा ही समझो ताकि Yeah. अपने आप को कि उससे कोई मकसद ही होगा प्रोटेक्ट कर सके. Yeah. सो इस तरह आप कर सकते हो ना कि वो कहते हैं ना कि योर बैड एक्सपीरियंसेस will make you hard. And that has happened to me. I've had bad experiences and I started to become really hard towards myself and towards the world, you know. Just when I took a step back and I reflected and I said, no, you know, I've always been a soft person Yeah. and I want to remain a soft Yeah. person, and I'm not going to let a few bad experiences with a few people who are not even entirely bad. Like, मुझे होता है कि अगर कोई बुरा भी है तो उसकी भी कोई वजह है. So don't let their life उनको भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसने उनको हार्ड बनाया है. You know, so Yeah. don't let that Nobody is ripple born a effect. bad person. Yeah. मतलब वो एक होता है ना कि एक बंदे के साथ बुरा हुआ, जिसने वो हार्ड हो गया, उसने दूसरे के साथ Yeah, बुरा it's a किया. whole cycle. Yeah, and I was like, no, I'm not going to be part of that cycle. I'm going to break it. Yeah. And I'm going to try to remain as soft as Yeah. possible. Obviously, it's not easy. आपके साथ रह जाती हैं वो चीज़ें. और hate ही breeds hate. Yeah, किसी ने true. आपके hate किया, वो आपके अंदर भी breed होगा और आपके अंदर भी पैदा होगा. And you have to sort of, वो ये एक internal battle है फिर से कि no, I'm not going to continue this and I'm going to try to remain as soft as possible and let it go, because उस बंदे के साथ भी शायद कभी कुछ हुआ हो that has made them into this person, and I don't want to, क्या कहते हैं कि हम जैसे hate एक जैसे एक चीज़ है जो ट्रैवल कर रही है थ्रू पीपल, एक के बाद दूसरे में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट वायर, कह लें, पार्ट ऑफ दैट transport system which takes it further. I'm going to take myself out of it so that it ends with me, maybe somehow, and it doesn't go on to the next person. And maybe, you know, we can all do that. कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, do Even not in take my it forward. case, like you know, people who have been through something, an incident, or people like me, I see so many of them get into that revenge mode क्योंकि Yeah. दुनिया ने मेरे साथ ऐसा Yeah. किया है तो मैं भी दुनिया के साथ ऐसा करूँगी. So yeah, I mean, और ये बड़ी सबकॉन्शियस चीज़ होती है. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सोचा है कि अब मैं ऐसी हो जाऊंगी. ये हो जाता है. ये बस It हो जाता है, happens. truly. तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं ऐसी नहीं हूँ और मैंने ऐसे नहीं ही होना और ना मैंने ऐसा बनना है. You know, वो कहते हैं, there is a very famous line, it says you become what you abhor. यानी जिस चीज़ से आप हेट करते हो, जिसको आप जो बुरी लगती है, आप वो ही बन जाते हो. True. Because you hate it so much, you end up sort of becoming that. So आपके साथ किसी ने आके बुरा किया और आप वही चीज़ आगे दूसरों के साथ करना शुरू किया, क्योंकि आपके साथ भी तो हुआ था. बिल्कुल. तो ये जो है बड़ी एक चीज़ है, इसके आपको ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ता है और सोचना पड़ता है that I'm not going to continue this. I'm not going to take this forward. If I hated it so much, then I have the responsibility to make it stop. You know? Yeah. वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब जिन लोगों के साथ बचपन में कोई हरासमेंट हुई होती है या अब्यूज़ हुआ होता है, उनके पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं, तो वो बाद में जाके वो भी अब्यूसिव बनते हैं. या जिस तरह बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपकी मदर इन लॉ अब्यूसिव थी तो आप भी अब्यूसिव मदर इन लॉ ही बंदा जो चीज़ देखता है वही पिक करना शुरू हो जाता है. वही बनता है. और इसकी एक वजह ये भी होती है कि यू नॉर्मलाइज थिंग्स टू कोप विद देम. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक टॉक्सिक सिचुएशन में हूँ जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चले मैं अपनी बात नहीं करती, किसी की भी बात करती हूँ कि अगर किसी की मदर सन या मदर डॉटर रिलेशनशिप ऐसे कि द मदर इज़ वेरी टॉक्सिक और अब्यूसिव, so that child will grow up thinking that is normal and it's okay to be like this, only so that they can survive. Yeah, this is कि how it's ऐसे ही supposed to होता be. है. हाँ, because they can't live their life Yeah. every day thinking that this is so wrong. So just to cope and to survive, they will normalize it for Yeah, themselves. because they've never seen it the other way around. As So well. they think it's normal. Yeah, so when they grow up, they're going to be the same with it. कि ऐसे ही this is normal. बिल्कुल. And it's basically a way of survival. तो इन चीज़ों के बारे में like you have to really sit and think like, what am I doing? Is this even right or not? Even though you've suffered through that abuse and through that torture, but आप ही उसको you carry it in and then you forward it. Yeah. So True. we all must learn how to break the
the chain that is very toxic. हाँ मैंने बहुत बोल लिया. But yeah, I really wanted to put this out there. खैर हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे लास्ट? I was so lost in But खैर हाँ, so anything you want to say? I think the voice inside you really matters. Like मतलब बहुत लोग कोशिश करते हैं दबाने की उसे, and sometimes आप खुद भी नहीं सुन पाते, but you have to listen to yourself, and you just have to know that you are worth it all. I mean, लोग बोलते रहेंगे यार आपने लोगों के साथ नहीं रहना. You have to live with yourself. ये वाली वॉइस सबसे ज्यादा मैटर करती है. Exactly. हाँ हाँ. So I feel like जब तक मैं अपने आप की इज्जत नहीं करूँगी कोई भी नहीं करेगा. जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी कोई भी नहीं करेगा. लोग यार बेचारी हालात निमारी समझ के आपको भी मतलब उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह आप अपने आप को करते हो. Because you normalize it in a way. कि मतलब हाँ यार मुझे आके ऐसे ट्रीट करो, I'm fine with it, I'm used to it. But you have to say no. You have to stop this. I mean, you have to know your worth. अगर ये एक दिन में नहीं आती या किसी टेड टॉक से या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के नहीं आती, you have to do it on your own. होता है ना कि यार मैंने ये मुझे इंस्पिरेशन मिल गया, now I'm gonna do it. No, it It's doesn't. not that it doesn't easy. work that way. It's not that Yeah, easy. so yeah, it only depends on you. Your happiness and your happiness only depends on you. You have to know your self-worth, and you are the one जो मतलब decide करेगा कि क्या है मेरी self-worth. आप ही के अंदर से ये आवाज़ आएगी, I feel like कि नहीं यार I'm better than this. I don't deserve this. I don't deserve this. Yeah, I have done nothing wrong to deserve this. That's what I used to say to myself कि मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया. हाँ, मेरी क्या गलती है? Yeah, I was born with it. तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया होगा. You know, you are like that. But yeah, I think everything happens for a reason. I mean, I may not know the reason of this happening, but who knows? I mean, I'm not anyone to question Allah. मतलब उसने मुझे दिया है तो just accept it. कोई Be वजह happy होगी. with it. हाँ. Yeah. That's all I can do. मतलब अपने आप को कोस के या सैड होके या आपकी एक ही लाइफ है, उसी को आप रो के गुजार दोगे तो क्या फ़ायदा यार. I mean, yeah. So I've just accepted it, and I like myself now, and you have to do. I mean, there's no other way. There's no other way. You have. अगर to be मैंने happy जीना with ही है. हाँ. Exactly. हाँ. And also, yeah, don't depend on others. Your happiness depends on yourself. Like पहले मैं होती थी कि मतलब you know that thing we talked about pretending कि लोग तारीफ कर रहे हैं for a while आपको अच्छा लगने लगेगा. That was the exact case with me. And then I used to go home and then I used to cry कि यार I'm all alone. So you have to be okay with being alone. You have to be happy that even no one is with you. You are okay. You are completely happy with yourself. Yeah. क्या कोई नहीं भी कह रहा Yeah. और आपकी तारीफ नहीं भी कह रहा तब भी exactly. आप खुश हो. कोई और नहीं कह रहा तो आपको पता होना चाहिए कि यार I am pretty. हाँ. That I am beautiful. कोई कहे ना कहे, it doesn't matter. हाँ. So yeah. Like I remember जब मेरी नई नई शादी हुई थी या क्या, like if my husband like didn't compliment me, like अगर मैं तैयार होती थी कहीं जाने के लिए शादी टाइप, like मैं आज अच्छी नहीं लग रही क्या? Like आप बहुत अच्छी लगी. मैंने कहा था आपने आज बोला क्यों नहीं? You know, like it shouldn't matter. Like it doesn't have to be told to me every time. You Yeah, know? it happens with me actually. कि मतलब मैं तैयार हुई हूँ and if I'm looking pretty, कोई ना भी कहे ना, I'm like okay. But I'm not feeling that inside कि नहीं यार मैं आज अच्छी नहीं लग रही. तो कोई जितना भी मुझे कह लेना आज तुम बहुत अच्छी लग रही है, I'm like no. पता है मेरे साथ तो ये भी हो चुका है कि एक दो दफ़ा मैं तैयार हूँ यार मैं आज बड़ी फिट लग रही हूँ, लाइक अपने अंदर वो थी. और फिर जब किसी ने नहीं कहा ना तो मैंने कहा है शायद मुझे ही लग रहा था. I'm like the other way around. क्योंकि I'm waiting for someone to tell me. Yeah, I had that thing, but now I'm like कि मतलब अपने आप को अच्छी लग रही हूँ ना. That's good enough. Yeah. हाँ. कोई कुछ भी कहता रहा है, but if I'm not feeling that confident, I'm not looking that pretty, और मुझे नहीं लग रहा कि मैं हूँ आज अच्छी तैयार हुई हूँ, और कोई कहे कि यार बहुत अच्छी लग रही है, I'm like no dude. जो भी कह लो नहीं होगा कुछ भी. You believe yourself more. हाँ हाँ सही. So the whole point is you have to listen to yourself हाँ. before listening to anyone. चलो थैंक यू सो मच हमना. Thank you for having me. थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. इवन दो इट वाज द सेकंड टाइम बट इट वाज स्टिल
very good conversation और अच्छा flow था, मज़ा आया. मुझे भी. Anything else we talked about last time that we didn't this time around? So, नहीं है ना? I think we covered everything. I think it was actually better this time around. Yeah, शायद, है ना? I'm more confident today. उस दिन I was like, अच्छा ये बोलूँ ये नहीं बोलती. Practice हो गई थी ना उस दिन. हाँ. So Hamna, before you go, there was something that I had to give you. This is from Manto. उन्होंने आपके लिए एक gift package भेजा है. You can show it in the camera. It's so cute. Oh, it's my name. It has my name written. Yes, it has your name written on it as well. Thank you so much. Yeah, I wonder what it is. Looks Can I nice. open it? Chale, thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you guys learned a thing or two. मुझे बहुत मज़ा आया हमना से बात करके for the second time. Likewise. And see you again inshallah next time. Allah Hafiz.